Good afternoon, my dear students. Once Good again, I afternoon, welcome sir. you in today's Good session. afternoon, My sir. dear students, Good yes, afternoon, sir. good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Students, yesterday I was discussing about the poem uh, Rain on the Roof. I have not mentioned here Rain on the Roof. By quotes, Kenny. My dear students, I had explained first stanza and I had told you about the rhyming scheme. When I was discussing, when I was telling you about the poetic devices, about the figures of speech which have been used by the poet, the time was over. So let me once again, at the very first alliteration. Yes, अनुप्रास अलंकार. Afternoon, sir. जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, it means when a sound is repeated 2-3 times in a line of a poem, there is nothing, only alliteration as humid, hover, her sound and starry spheres, sound and press the pillow, per sound and lie listening, la sound, la sound, and next figure of speech or next poetic device is personification. Next is personification. Personification. When some non-living things, जब कोई निर्जीव चीज सजीव बना लिया जाता है, when by the poet some non-living thing is used as living, there is nothing, only personification. My dears, personification इस पूरे स्टैंजा में कहां है, किस लाइन में है? लेट मी टेल यू. बेटे, note this, the line third. Melancholy darkness gently weeps. A verb is given here, weep. बेटे, weep जो है यह क्रिया हमेशा, this action is done always by a living, हमेशा एक सजीव प्राणी के द्वारा ही weep किया जाता है, रोया जाता है. And by the poet, means poet wants to say here melancholy darkness gently weeps, means this is melancholy darkness is personified by the poet. So in this line, in the line third, personification is third line. In third line, personification is. One more poetic device or figure of speech, onomatopoeia. Onomatopoeia. This is O. It is called in Hindi ध्वनि अलंकार. किसी चीज की जब ध्वनि को, जो रियल साउंड होता है, उसको कविता में जब दे दिया जाता है, तो वहां पर ओनोमेटोपोइया होता है. तो कहां पर? पाटर. Patter is the sound of the rain. Patter is the sound of the rain. It means in the 7th line, 2, 4, 6, 7. In 7th line, patter, in word patter, onomatopoeia is used. Now, let me write. Sir, what you have written? Onomatopoeia.
means ध्वनि अलंकार. Now let me write stanza second. We have to listen the explanation of second stanza and also poetic devices and rhyming schemas. Every tinkle on the shingles, every tinkle on the shingles has टिंकल्स मतलब echo सर in the heart and a Poetic thousand devices. dreams and a टिंकल मतलब बता रहा हूं बेटे thousand dreamy fancies into busy being start and a thousand recollections weave the air threads into oof annihilation to the pattern of the rain upon the roof. Stanza second. Marius, I have written here stanza second. Now let me explain at the very first in stanza second what the poet wants to say. Marius, let me recite once more time. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreaming fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into oof, and are relation to the patter of the rain upon the roof. Every tinkle, a sound of falling raindrop. एक बूंद के गिरने पर जो साउंड उत्पन्न होता है उसको टिंकल कहते हैं. Keep in your mind, this is not twinkle, tinkle. This is tinkle. Tinkle on the shingles. Tinkle on the shingles. What is shingles? Shingles, it is given in your book, rectangular wooden tiles used on roofs. Marius, every tinkle on the shingles has an echo in the heart. Shingles means एक जो नीचे से जो छत दिख रहा है कभी को या ऊपर जो छत है उसमें एक नक्काशी बनी हुई है जो टाइल्स की तरह उसमें दिख रही है छत में, तो उसी को कह रहा है एवरी टिंकल, एवरी ड्रॉप of the rain which create sound has an echo in the heart. अपने आप में तो वो साउंड उत्पन्न कर ही रही है, हृदय के भीतर भी एक साउंड उत्पन्न कर रही है. कुल मिलाकर के द पोएट वांट्स टू से रेन ड्रॉप्स आर क्रिएटिंग, जो रेन ड्रॉप्स हैं आर फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ टीन शेड एंड दे आर क्रिएटिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ इको इन द हार्ट. इनके गिरने से एक अजीब तरीके की ध्वनि हृदय के भीतर भी हो रही है. And a thousand dreamy fancies, and the poet starts to have dreams, but not in
द नंबर 1 इन 1000, और हजारों हजारों की संख्या में जो ड्रीमी फैंसीज मतलब स्वप्न उनको उनके अंदर आने लगते हैं, वह स्वप्न देखने लगते हैं। बहुत सारे स्वप्न मीन्स वह पूरी तरीके से स्वप्न में खो जाते हैं। इनटू बुजी बीइंग स्टार्ट एंड 1000 रिकलेक्शन। और कभी क्या महसूस करते हैं, जब वर्षा की बूंदें उनके छत पर गिरती हैं तो हजारों स्वप्न वो देखने लगते हैं। बहुत सारे स्वप्न में वो चले जाते हैं, और 1000 रिकलेक्शन, हजारों हजारों की संख्या में जो मेमोरीज हैं, रिकलेक्शन मतलब मेमोरीज, जो मेमोरीज हैं वो सब उनको याद आने लगती है। मीन्स कंप्लीटली द पोएट वांट्स टू से दैट ही इज फुल ऑफ मेमोरीज, he is remembering all the memories which he has uh, which was related which were related to past। उनके अतीत में जो मेमोरीज हैं, जो यादें हैं, वो सब की सब याद आने लगती हैं। और weave their 1000 recollections, weave their air threads into oof, means let me check the meaning of oof. Wave thread woven across the loom, means the poet wants to say 1000 recollections are coming and they are weaving, all the 1000 recollections are weaving, all the 1000 memories are weaving, बुन रही हैं, their air threads into oof, means कहीं ना कहीं ये सभी यादें हमें तकलीफ पहुंचा रही हैं। they are increasing my sorrow, वो मेरे तकलीफों को बढ़ा रही हैं। and I listen to the patter of the rain upon the roof, and I listen, और मैं सुन रहा हूं, to the patter, वर्षा की बूंदों का गिरना, of the rain, वर्षा की बूंदों का, upon the roof, छत के ऊपर, means when the poet listens the sound of the rain, 1000 dreams, means a number of dreams he sees, and he sees also he goes into deep with 1000 memories. So on the other hand, he feels something sad to himself, अपने आप में कहीं ना कहीं वो उदासी को महसूस करते हैं जब इस तरीके की स्थिति हो जाती है। तो my dear students, in the second stanza the poet says that how recollections come, and how 1000 dreams come in the mind of poet, in the heart of poet, and how he becomes sad. Now let me explain, let me tell you the rhyming scheme of the given stanza. The last word of first line, shingles, it is A. Heart, it is B. Fancies, the last word of third line, it is C. And start, here you have to focus. Heart, start, heart, start, heart, start, means both words have same pronunciation. That is why it is once again B. Recollection, D. Oof, start. Oof, E. Pater, F. Roof, E. Because roof and oof, both words have same pronunciation, it means the rhyming scheme is AB, CB, DE, FE. This is the rhyming scheme of the given stanza. Marius, now you must note down in your copy the rhyming scheme of second stanza is A, B, C, B, D, E, F, E. Now let me tell you about the
poetic devices used by the poet. At the very first, alliteration. Alliteration. In first line, there is no alliteration. And second line, there is no alliteration. In third line, thousand dreams, fancies, no alliteration. Into busy being, yes, ba sound. Ba sound, ba sound is repeated. Ba sound is repeated. समझ में आ रहा है? Ba sound is repeated in the fourth line, and in fifth, thousand recollections, there is no alliteration. Dear air threads, dear threads. In these two words, dear threads, dear threads, the sound is repeated, and I listen to the patter, the rain upon the roof, rain upon the roof, ra sound is repeated. First is the alliteration, and the second one is onomatopoeia. Onomatopoeia. Dhvani alankar. Tinkle, in the word tinkle, in the first line, a word has been used by the poet Tinkle and Potter. In the whole stanza, in two lines, in the line first and in the line seventh. In the first line, the word tinkle is the sound of rain, and in the last, in the one line before last, अंतिम लाइन की एक लाइन पहले वाले में जो अंतिम शब्द है पाठ, इन दोनों में onomatopoeia, फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइसेस का प्रयोग कभी ने किया है. एंड द थर्ड, personification. Personification. I have to check personification has been used or not. बेटे, one word has been used, weave. Actually, weave जो शब्द है, weave जो क्रिया है, यह किसी मानव के द्वारा ही या किसी सजीव के द्वारा ही संभव है. जैसे मकड़ियां जो हैं अपने जालों को वो बुनती हैं, दे आर लाइविंग, वह जीवित हैं, इसलिए तो ये वीव करने का जो कार्य है, द एक्शन ऑफ वीव इज डन बाय अ लिविंग थिंग. सो बिफोर one line, thousand recollections in the word, in these two words, thousand recollections, हजारों मेमोरी हैं, जो हजारों यादें हैं, वीव बुनती हैं. इट मीन्स किसको पर्सोनिफाई किया गया है, कौन बुनता है, हजारों यादें. इट मीन्स थाउजेंड रिकलेक्शन, इस शब्द में पर्सोनिफिकेशन है. Now, my dear students, let's go towards the last stanza of the poem. Third stanza of the poem. Stanza third. Now, in memory comes my mother, as she used in years gone. To regard the darling dreamers are left
them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles, upon the shingles by the part of the rain. By the patter of the rains. Students, here I have completed stanza 3rd, and today we have to finish this chapter. The very first difficult words. Let's talk about the difficult words. Memory comes in my mother. There is no difficult word. She used in years agone. Agone, yeah, agone. The word agone. Agone means past. To regard the darling dreamers. Dreamers means one who dream, one who see dreams. जो स्वप्न देखता है उसे ड्रीमर कहते हैं. अर 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 she left them or means before till the dawn. Oh, I feel dawn, the time before sun rising. Dawn means the time before sun rising. उषा काल इसे हिंदी में कहते हैं, सूर्योदय से पहले के समय को. Oh, I feel her fond look on me, and I listen to this refrain. This refrain. List here. The meaning of list is listen. This is old poetic word listen, sunna, analyst, and refrain. Refrain means repeated line. Repeated line. Repeated line. Now, my dear students, let me explain. Now, in the 3rd stanza, the poet wants to say, now in memory comes my mother, when he feels that 1,000 dreams are coming, and when he feels that 1,000 memories are coming. In that moment, he feels that in his memory, his mother comes. वो फील करता है, वो महसूस करता है कि ओहो, इट मीन्स कंप्लीटली ही रिमेंबर्स हिज मदर. वो अपनी माँ को याद करने लगता है. उसकी यादों में जो उसके सामने यादें आ रही हैं, उनमें उसकी माँ दिखाई देने लगती है. एंड सी यूज्ड इन इयर्स अगॉन. what she used to love, to have affection for the poet. अगान मतलब जो कि बहुत पहले जिस तरीके से रहा करती थी, कवि को बहुत प्रेम किया करती थी, वो सब चीजें उसको याद आने लगी. To regard the darling dreamers, or she left them till the dawn. जैसे एक माँ as a mother lul, a mother lulls her son. लूल्स मतलब होता है थपकियां लगाकर सुलाना. जैसे माँ जो है हजारों प्रकार के सपने दिखाती है, लोरियां सुनाती है, और बच्चा जब अबोध होता है तो ही डजंट नो अबाउट एनीथिंग. लकड़ बघवा और क्या क्या वो कहती है, सपना दिखाती है, इसी में सुबह हो जाता है, पता ही नहीं चलता है. सवेरे वो सब चीज जैसे गायब हो जाता है बच्चे के दिमाग से. ठीक वही बात कवि महोदय हमारे कर रहे हैं. करें as she used in years agone, what she used to do with me
वो मेरे साथ जो करती थी, to regard the darling dreamers or she left them till the dawn. मतलब हजारों प्रकार से, means with with many times she used to show me different type of dreams, and oh I feel her fun look on me. और किस तरीके से, किस अफेक्शन के साथ, किस स्नेह के साथ उसकी दृष्टि मेरे पर पड़ती थी, किस तरीके से माँ मुझे देखती थी. द पोएट इज रिमेम्बरिंग एट दैट मोमेंट ऑफ दैट मोमेंट, ही रिमेम्बर्स ऑफ दैट मोमेंट, उस मोमेंट को वो याद करता है और वह दुखी हो जाता है कि ओह माँ किस तरीके से मुझे देखती थी. एंड ओ आई फील हर फंड लुक ऑन मी विद क्यूरियोसिटी. she used to look on me, वो मेरे को देखती थी. as I listened, means as I listened to this refrain, जब मैं इस वर्षा की बूंदों को बार बार गिरना सुन रहा हूं, तो मैं, जबकि मैं सुन रहा हूं तो ये सभी जो मेरी माँ से जुड़ी हुई यादें हैं वो सब मुझे याद आ रही हैं. विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, वो सभी यादें, ऑल द मेमोरीज आर प्लेइंग अपॉन द शिंगल्स, वो छत के चौकोर बने हुए टाइल्स पर प्ले कर रही हैं. बाय द पाटर ऑफ द रेन, मीन्स बाय द सॉन्ग ऑफ द रेन. इट मीन्स इन दिस स्टैंजा the poet remembers his mother and he feels sorrow. He feels very sad to think about his mother, and all the memories related to his mother are coming in the heart and in the mind of the poet. So he realizes that really the raindrops are increasing my joy, but on the other hand, these raindrops are increasing my sorrow also. On the one hand, he realizes that एक तरफ वो ये मानता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरे तरफ कविता समाप्त होते होते कवि ये कहना चाहता है कि कहीं न कहीं ये वर्षा की बूंदें हमारी तकलीफों को बढ़ा रही हैं, क्योंकि इनकी वजह से मुझे मेरी माँ याद आ गई. शायद दिन खुला रहता, हम अपने काम पर जाते तो किसी तरीके की सोच नहीं आती, लेकिन इनकी वजह से मैं घर पर रुका और इनके साउंड को सुनते सुनते मुझे अपनी माँ की याद आ गई, जिसके कारण मैं बहुत ही दुखी हुआ. तो my dear students, in this way I have completed the explanation of third stanza. Now let me clear the rhyming scheme. Bete, the rhyming scheme will be shame. What? A, this is A, B, C, B, D, E, F, E. Because rain, refrain, both have the same sound, and be, done, gone, both have the same sound, same pronunciation. So the rhyming scheme of the whole poem is A, B, she, B, D, E, F, E. Is it clear? Now let me tell you about the poetic devices, Betty. At the very first, let us talk about alliteration. Now in memory comes my mother, ma sound is repeat. My mother comes my mother, ma sound is repeated. And regard to darling dreamers, the sound, the sound is repeated. And she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me. There is no alliteration in this line and in this line. And I listen to this refrain, which is played upon the shingles, patter of the rain. Means only in first line and third line, alliteration is used, and
There is no other figure of speech or poetic devices has been used in the given stanza. So my dear students, in this way, the poem is completed here. And now I'm going to talk to you